Good morning, students. I hope you're doing well. If I'm audible, please let me know. Good morning. Good morning. Right. So, we were talking about the anti-colonial rebellions. We had covered the tribal revolts. And now we have to talk about the peasant uprisings, the politico-religious rebellions, and feudal revolts. Right? तो ये वाला हो चुका है. ये तीन हमें और कवर करने हैं in the localized anti-colonial uprisings. So first we are going to talk about the peasant uprisings. Now, apart from the Great Revolt of 1857, which was characterized by immense peasant participation, are you aware of certain other localized peasant uprisings which took place before and after the revolt of 1857? कुछ के नाम आपको आइडिया पता है? नहीं? So these include uprisings such as the Rangpur Dhing or the Rangpur Rebellion, the Pabna Revolt, Indigo Revolt, the Deccan Agricultural Riots, the Eka movement, etc. Right? Now, the Rangpur Rebellion took place in 1783 in Bengal, the Indigo Revolt in 1860, also in Bengal, the Pabna Revolt in 1870, also in Bengal, the Deccan Riots in 1875-76 in the Deccan region in Maharashtra, and the Eka movement in 1920-21 in अवध. तो क्या पैटर्न देखने के लिए मिला है हमें? That first of all, they have taken place across 3 different centuries, right? 18th century में भी, 19th century में भी, and 20th century में भी. They have also affected different regions of the British Indian Empire, so they have not been concentrated in any single region, right? What does this tell us about the effect that the British were having on the interests of the peasantry? किस तरह का impact पड़ रहा था? A highly destructive one. These were the outcomes of rising peasant distress. And why was peasant distress rising? Why were the peasants unhappy with British rule? इनकी जो सिचुएशन है उस पिक्चर में क्या चेंजेस आए थे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल? फर्स्ट ऑफ ऑल, द बर्डन ऑफ टैक्सेशन had increased sharply. Secondly, their security had also been affected adversely. That means the ability of the peasants
to cultivate their lands that they had been cultivating traditionally since several generations. Now that was lost. They were subjected to the whims and fancies of the colonial officials as well as the local intermediaries such as the talukdars, zamindars, the lambardars, etc. Right? So, poor security of tenure and rising landlessness were other causes. Thirdly, the British, especially since the beginning of the 19th century, had made a focused attempt to deindustrialize India because they wanted to flood the Indian market with British manufactured goods, right? And what was the result of the deindustrialization of India? The artisans who were living and working in the cities suddenly lost their livelihoods and they had to migrate from the cities to the villages. So with deindustrialization, there was ruralization of India. And in the villages, what was the only occupation that was open, that was available to them? Agriculture. And this is going to result in the influx of a major proportion of India's workforce into a non-productive sector, which was being impacted very adversely because of the British revenue policies as well as the new attitude of the landowners who were not interested in improving agriculture or expanding agriculture, but only in squeezing the surplus value created by agriculture at all costs, right? Therefore, the burden of taxation, the burden on agriculture increased as a consequence of deindustrialization. And what would be the result of this? The growing fragmentation of land holdings, increase or decline in the marginal productivity of agricultural labor, decline in the marginal productivity of agricultural labor, increase or decline in disguised unemployment, increase in disguised unemployment. What was requiring earlier at most one or two farmers to do now was being done by 6 or 7 farmers. So real productivity है वो rise नहीं हो रही थी, and this was also leading to unemployment. Of different varieties, disguised as well as apparent unemployment, right? What was the result of all of this on the general condition of the peasants? Would poverty increase or decline? Poverty would increase. Did the British make any attempts to actually invest in and improve agriculture, especially in the permanently settled areas? No, because they would have gotten no returns on that investment, right? And as a result, did the British ever make any attempt to extend formalized credit to the farmers living in Bengal, Bihar and Awadh? नहीं. तो यहाँ पे जो हेवी बर्डन ऑफ टैक्सेशन था एंड जो थ्रेट ऑफ एविक्शन था, उसको ओवरकम करने के लिए फार्मर्स को टर्न ओनली टू वन सोर्स, दैट इज informal money lenders, loan sharks, right? And as a result, rural indebtedness also increased, right? With rural indebtedness came the problem of bonded labor, as the free peasantry of India was transformed brutally into almost virtual slave labor. And this became a generational problem, right? Further,
with the accelerating industrialization of Britain, the demand for India's raw materials by the British industries that kept on rising. How did it affect agriculture in India? Some new kinds of crops are going to be promoted. What will these be? Food crops or cash crops? Cash crops. This is known as the commercialization of agriculture. How did it affect the Indian economy and the farmers' interests? This is going to lead to, first of all, the shortage of food crops. And secondly, this is going to expose the Indian farmer to the fluctuations of the global markets, global crop markets. And economic vulnerability of the Indian farmers is going to increase manifold, right? So, so even a bountiful crop was no guarantee against privation, against shortage, against losses, right? And what was the combined effect of both of these? First of all, because of food shortages, food prices were already inflated, and if farmers were not able to generate sufficient profit, then they would not be able to afford the food crops at higher prices. And this food shortage is going to take on a very catastrophic element, right? It is going to lead directly to major and frequent famines. And we have already seen what the British attitude towards famine was in India. What did they attribute it to? Blindly to natural calamities. They absolved themselves of any responsibility for the problem of recurring famines. And with such an attitude, were they liable to make any attempts to address this problem? नहीं, वो तो क्या बोलेंगे, कुदरत का निजाम है, ये तो होना ही है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं. That is why they did not try to intervene in any significant, serious or sensitive manner. And thus, the suffering of Indian farmers increased appreciably since the end of Mughal rule, since the beginning of British rule, right? And इसका natural outcome क्या होगा? The outpouring of discontent. Now, peasants have different ways of showing discontent. First, they can use the non-violent path of not cooperating with the exploitative system. वो क्या करेंगे? अपने फील्ड्स को अबैंडन कर देंगे, दूसरे गांव में चले जाएंगे जहां का जमींदार थोड़ा नरम दिल का होगा, या फिर जंगलों में चले जाएंगे. They are going to turn their cattle loose, abandon their fields and simply vanish from the scene. या तो वो ये कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन क्या होगा? They can organize, come together, mobilize themselves and make a show of force. They can register their protest. Now, इस समय was the British court system well developed enough to absorb this discontent? जो लीगल सिस्टम था, was it accessible to this class of peasantry? नहीं. It was first of all extremely biased. It was adding as the legal wing of the British colonial machinery, जिसका पर्पस ही peasants को exploit करना था. That is why the peasantry was never going to get a fair hearing, right? And in this scenario, what is the only logical outcome for them? To rebel against the entire system. Okay? And these various revolts and rebellions were simply the expression of peasant discontent combined with the feeling of helplessness that the peasantry felt under the exploitative colonial rule. ठीक है?
इसको जल्दी से अब लिख लीजिए, राइट डाउन। The peasants of India were among the worst affected classes to suffer under British rule. To suffer under British rule. Full stop. Next point. Ever since the establishment of colonial rule, ever since the establishment of colonial rule, the British made a conscious attempt to maximize agrarian revenue regardless of the suffering of the Indian peasantry. Regardless of the suffering of the Indian peasantry. Full stop. Next point. Thus, it is not surprising that throughout British rule in India, several large and small peasant rebellions took place. Several large and small peasant rebellions took place, including, you can write the name of these 5 rebellions. The Rangpur Dhing, 1, 2, 3, 4, 5 करके, including the Rangpur Dhing, 1783, Bengal. Number 2, Indigo Revolt, 1860, Bengal. Pabna Revolt, 1870, Bengal. Number 4, the Deccan Agrarian Riots, 1875, Maharashtra. Number 5, the Eka movement, 1921, Awadh. Full stop. Next point लिखो. It is clear from this list of peasant revolts that agrarian discontent was endemic to British rule. Full stop. It was confined
neither to any region, neither to any region, nor to any time period, nor to any time period. Full stop. Thus, it was a universal outcome of colonial exploitation. Of colonial exploitation. Full stop. Next point. The specific factors for peasant discontent with colonial rule are as follows. Number one, the heavy burden of taxation. The heavy burden of taxation pushed the peasants towards desperation. Towards desperation. Full stop. Number two, the peasants were alienated from their traditional rights, privileges, and even property. Privileges and property as British administrative innovations. As British administrative innovations such as the zamindari, rayatwari, and mahalwari settlements created the problem. Rayatwari settlements created the problem of landlessness. Of landlessness. Number three, write down. Since the beginning of the 19th century, as the British destroyed Indian handicrafts, to flood the Indian market, with British cotton, there was a major wave of migration from Indian cities to the villages as artisans lost their livelihoods. Full stop. This increased the burden on agriculture
further compounding the problems of the Indian peasantry. अच्छा, the peasantry of India was also directly affected by India's deindustrialization. देखो, एक तो इफेक्ट पड़ा इनडायरेक्ट तरह से कि एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ गया, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि peasants of India were working not only in their capacity as farmers but in the off season, especially women क्या काम करती थी? बुनाई का काम करती थी, right? So every household was acting as a cottage factory, and from there the entire village was contributing to the textile industry, right? So with the deindustrialization of India, जो rural cotton की demand थी वो भी खत्म हो गई, तो additional source of livelihood जो था farmers का वो भी गायब हो गया. This further compounded their problem of rising poverty. Next main point लिखो. कितने? 4 लिखे आपने? 3. चौथा लिखो. हाँ, मेन पॉइंट नंबर 4. Write down. With the influx of urban artisans, with the influx of urban artisans, comma, the landholding structure of India collapsed. Full stop. Holdings were fragmented, resulting in stagnation. ठीक है. Number 5. Due to stagnant agriculture, comma, the problem of disguised unemployment increased substantially. Number 6. The combined effect of these problems was a perceptible rise in rural poverty. Full stop. Number 7. Since the British were never interested in actually promoting agriculture, comma, they never attempted to create a robust mechanism for agrarian credit. Full stop.
As a result, farmers easily fell into the clutches. Farmers easily fell into the clutches of predatory moneylenders. Of predatory moneylenders. Full stop. Next point, number 8. As a result of rural indebtedness, comma, the peasants lost their property, their homes, their property, comma, their homes, comma, their land, and ultimately their freedom. As bonded labor reared its ugly head. Bonded labor reared its ugly head. Reared, R-E-A-R-E-D, its ugly head. Its ugly head. Next लिखो, number 9. With the accelerating pace of British industrialization, with the accelerating pace of British industrialization, comma, the demand for Indian raw materials kept rising. Full stop. In response, the British encouraged, comma, often forcibly, the cultivation of cash crops, such as, can you give some examples? Cotton or indigo or jute or sugarcane. What else? Tea, coffee, etc. Now, commercialization of agriculture often results in a rising prosperity, but that was not the case over here, because the British, sitting in the middle between India, where the produce was being created, and Europe, where the demand was being generated, they took most of the share of profits. So it was the British commercial interests who benefited the most rather than the Indian farmers. Secondly, it should be a natural process. The commercialization of agriculture, the promotion of cash crops should be a natural and organic process. That was not the case in India. India में priority क्या था? That the farmer should first worry about securing his own calorie needs, ठीक है, calorific needs. तो अभी subsistence level पे फूड क्रॉप्स को कल्टीवेट करने की भी स्टेज में नहीं पहुंच रहे थे. फैमिन्स बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट? बट दे वर नाउ बीइंग फोर्स्ड to move away from cash food crops towards cash crops, and this had disastrous effects. Next point, write down number 10. The commercialization of agriculture
resulted in acute food shortages. Acute food shortages. Without giving sufficient returns to the cultivators, as the bulk of profits were cornered by European planters and traders. By European planters and traders. Number 11. Further, the Indian farmers were exposed to global price / supply fluctuations. Full stop. Now, since most of the profits were being cornered by the British planters and traders, अगर लॉस होता तो किसके मत्थे आना चाहिए था? उन्हीं के मत्थे आना चाहिए था. जिसका प्रॉफिट होता है उसी का लॉस भी होना चाहिए. रिस्क भी वही ले रहा है. But the British planters and traders simply shifted the burden onto the peasants. ठीक है? So when the profits were good, the Indian peasants did not benefit sufficiently. But when losses were high, they were affected worst. ठीक है? सेम पॉइंट में लिखो. Additionally, the British traders and planters could easily shift the burden of losses onto the farmers. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. नंबर 12. The combined effect of these developments were frequent famines throughout the entire length of colonial rule. In India. ठीक है? तो हमने देखा कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स थे फॉर परपेचुअल पेजेंट डिस्कंटेंट, such as heavy burden of taxation, rising landlessness, increasing burden on agriculture due to deindustrialization, fragmentation of agriculture, disguised unemployment, all leading to rising poverty. Further, without the presence of formalized credit, rural indebtedness became a big problem, resulting in the even bigger evil of bonded labor. Further, with rising demand of British industries, commercialization of agriculture in India was done forcibly, resulting in food shortages and the growing vulnerability of Indian farmers who were subjected to global price fluctuations for the first time in a major way. Combined effect was major and minor famines which took place in different parts of India at different stages of colonial history. Okay? And thus, peasant discontent was a perpetual feature of colonial rule in India. Clear? Now, next main point likho.
The peasants traditionally expressed their discontent either by abandoning agriculture altogether, either by abandoning cultivation altogether, comma, or by rebelling violently against the state and its representatives. मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में हमने कभी इस तरह के एपिसोड्स देखे? नहीं देखे? पेजेंट रिबेलियंस के। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी यही हुआ था। The failure of his policy of taxation in the Doab had resulted in a major famine from which agriculture could not recover deep even into the reign of Firoz Shah Tughlaq. That is why he had to take some mediating efforts, you can say policies had to be introduced, such as writing of the loans that had been given to the farmers, right? तो peasants ने तुगलक्स के पीरियड में क्या किया था? ओपन रिबेलियन तो नहीं किया था, बट बाय एंड लार्ज एग्रीकल्चर को अबैंडन कर दिया था, राइट? देन ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मुगल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, did we see any peasant rebellions? Yes, peasant rebellions were endemic. अवध में भी हुए, पंजाब में भी हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, सतनामीज ने भी किया, सिख्स ने भी किया, मराठास ने भी किया, राइट? So it had been the traditional way of the Indian peasantry to show their discontent. क्या क्या करना? या तो एग्रीकल्चर को अबैंडन कर देना या फिर ओपन रिबेल करना। सब पॉइंट लिखो। Thus, these two methods were used by the peasants even during British rule. ठीक है? However, there was a difference between these medieval Indian rulers and states and the new British imperial ruler. क्या difference था? The presence of the state at the lowest level of administration, at the village level, that was not very strong. ठीक है? जो स्टेट था वो जो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड होता था, राइट? And it depended upon the cooperation of certain rural intermediaries such as the local rajas, such as the local zamindars, to influence the developments at the village level, to be able to collect the taxes from the village dwellers. ठीक है? तो हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज रहता था between the state and these rural intermediaries. ठीक है? These rural intermediaries were acting as the link between the peasantry and the state in medieval India. अंग्रेजों ने आकर के क्या किया? ये रूरल इंटरमीडिएरीज की पावर को इन्होंने खत्म कर दिया and they replaced them with their own administration, their own police, their own revenue machinery, as well as their own laws and courts. ठीक है? All of which were against the interests of the general peasantry. जो लोकल जमींदार होता था in the medieval Indian period, he also realized that he does not have an infinite ability to pressurize and exploit the peasants, because he is also ultimately going to be answerable to them. If any general rebellion of peasants rises,
then they are either going to force him to collaborate with them against the state, या फिर अगर वो नहीं करता है तो उसी को सबसे पहले टारगेट करेंगे peasants, right? But यहाँ पे क्या हुआ? This was replaced by an entire governmental system. The British were able, through their more sophisticated organization, through their modern understanding of economics and administration, to permeate into the deepest levels of administration in a newly colonized country. And thus they were able to neutralize by and large the local elements. अब पहले के जमाने में the peasantry was looking towards the landlord, towards the zamindar for leadership. It was also looking towards the zamindar for protecting their interest against state excesses. But अब जो local leader है, he is powerless now, and therefore they do not have any option but to turn towards the British administration, their laws and their codes. British administration would either be apathetic or unresponsive or openly hostile towards them. तो इनके पास और कोई चारा ही नहीं बचा. Peaceful resolution became almost impossible, and therefore peasant rebellions multiplied. They became much more frequent. ठीक है? Next point लिखो. हाँ. It should also be remembered. It should also be remembered that there was a basic difference. There was a basic difference between the British colonial regime and medieval Indian states. And medieval Indian states. Full stop. Subpoint. On the one hand, comma, medieval Indian states were simply superimposed upon the rural civic society. Upon the rural civic society. Full stop. Medieval Indian rulers depended upon the active cooperation of rural intermediaries, such as zamindars, talukdars, mirasidars, etc. Mirasidars, etc. Full stop. Full stop. These elements played an important role in balancing the interests of the state and those of the peasantry. And the interests of the peasantry and those of the peasantry. Full stop. Next subpoint लिखो. On the other hand, comma, the British were able to
either remove the intermediaries altogether, either remove the Indian intermediaries altogether, or undermine them so thoroughly, or undermine them so thoroughly that they became irrelevant when it came to balancing British interests against that of the peasantry, against that of the peasantry. Full stop. The old local machinery was replaced by British institutions, laws, and courts. Full stop. These were at best apathetic, and often openly hostile towards the peasants. Full stop. Thus, the peasants were gripped by a feeling of hopelessness and desperation. Which resulted in several open rebellions. Subheading though, some important peasant uprisings. Number 1, Rangpur Dhing, 1783, Bengal. Write down. The peasants of Rangpur in North Bengal organized themselves under the leadership of Kena Sarkar, against the इजारादार of Rangpur. क्या नाम था इस इजारादार का? सॉरी,
देवी सिंह, ठीक है। So clearly, Rangpur Dhing was against the Ijaradari system that had been introduced by which British administrator in Bengal? वॉरेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। पता है ना इजारादारी सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग, यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे उसकी नीलामी होती थी और हाईएस्ट बिडर को वो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दे दिए जाते थे। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772 when he arrived in India as governor of Bengal, and फिर 1773 में वो गवर्नर जनरल बन गया था, राइट। तो स्कीम क्या थी कि रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स हाईएस्ट बिडर को 5 साल के लिए दिए जाएंगे। दिस वाज नोन एज द क्विनक्विनियल सिस्टम। रिजल्ट क्या हुआ इसका? लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बोलियां लगानी शुरू करी, राइट। एंड द अमाउंट दैट दे प्रॉमिस दैट दे आर गोइंग टू गिव टू द कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी हार्वेस्ट साइकिल वाज एक्सट्रीमली हाई। तो बर्डन ऑफ टैक्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा हाई होने वाला था, राइट। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको मिल रहे थे ज्यादा पैसे, राइट। सो दे वर गुड विद दिस अरेंजमेंट। सारा का सारा बर्डन किसके ऊपर पड़ता? पेजेंट के ऊपर पड़ता। अच्छा, जो कंपनी को रेवेन्यू देना था वो तो चलो एक बात थी, ये जो बंदा इसके ऊपर बोली लगा रहा है, इज ही डूइंग दिस आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट? नो, उस पे प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहा है, राइट। सो he would use extremely exploitative techniques, extremely brutal techniques in order to extract even more than the company was promised. उसका शेयर होगा प्रॉफिट का, राइट। एंड द इजारादार, इस सिस्टम को बोलते हैं इजारादारी सिस्टम। जो रेवेन्यू फार्मर होता है, यानी कि जिसने वो ऑक्शन में वो बिड जीती होती है, उसको बोलते हैं इजारादार, राइट। जो रंगपुर का इजारादार था देवी सिंह, he was using extremely brutal techniques to pressurize the local zamindars as well as peasants to give him great amounts of money. This had led to the ruination of the local agriculture and it was also pressurizing the local zamindars, ठीक है, क्योंकि अब लोकल जमींदार सीधे इससे ही डायरेक्टली बात करेंगे। कंपनी और जमींदार और पेजेंट्स के बीच में ये नया मिडिल मैन इमर्ज होकर के आया था, राइट। 1777 में वॉरेन हेस्टिंग्स को लगा कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज्यादा डिसकंटेंट बढ़ रहा है, सो दिस मे बी डेंजरस टू द ब्रिटिश। तो उसने क्या किया, ये जो 5 साल का सेटलमेंट था, ही रिड्यूस द लेंथ ऑफ दैट। अब एनुअली बिडिंग होगी, ठीक है। डू यू थिंक दैट दिस इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? नहीं, इनफैक्ट प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, सिंस द इजारादार इज नाउ गोइंग टू बी कन्विंस्ड कि मुझे एक ही साल मिला हुआ है अपने पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने का, सो इज गोइंग टू बिकम इवन मोर एक्सप्लॉइटेटिव। तो अब ये जो देवी सिंह है ये और ज्यादा टॉर्चर करने लग गया लोकल लोगों को, राइट। इन दिस बैकग्राउंड केना सरकार कन्विंस सम लोकल जमींदार्स एज वेल एज पेजेंट्स टू रिबेल अगेंस्ट देवी सिंह, टू एक्सपेल हिम। तो शुरुआत में तो दे अप्रोच द कोर्ट्स एंड एवरीथिंग। वर द ब्रिटिश एवर गोइंग टू कम ऑन देयर साइड? नहीं, ये हमेशा इसकी साइड लेने वाले हैं, क्योंकि इससे उनका इकोनॉमिक नाता था, पैसे ये दे रहा था उनको, राइट। तो दे केम डाउन इन सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश, राइट। तो केना सरकार नाउ कन्विंस्ड हिज फॉलोअर्स कि ऐसे बात नहीं चलने वाली है, अब हमें नाजिम को चेंज करने की जरूरत है, हमें गवर्नमेंट को ही चेंज करने की जरूरत है। तो ही ऑर्गेनाइज्ड एन ओपन एंड वायलेंट रिबेलियन। क्लियर? अटैक किसको किया? एक तो जो इसकी कोठी है उसको अटैक किया जाएगा, इसके मेन को टारगेट किया जाएगा, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनको बर्न किया जाएगा, साथ में और किसको अटैक अटैक किया जाएगा? जो लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट की बिल्डिंग्स है, जैसे कि कचहरी हो गई, कोतवाली हो गई, इन सबको अटैक किया जाएगा, राइट। तो ऑल दीज वर टारगेटेड। Finally, Warren Hastings had to send an artillery unit from Calcutta to Rangpur in order to suppress this rebellion. Rebellion तो suppress हो गया, लेकिन the British administrators were forced to reconsider their position regarding the इजारादारी system. इसीलिए 7 साल के बाद 1790 में कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया डेसिनियल सिस्टम और फिर उसके बाद उसको परमानेंट बना दिया गया 1793 में। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हो गया रंगपुर धींग। क्या लिखा है आपने अभी? अगेंस्ट द लोकल इजारादार देवी सिंह, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
Although the rebellion was suppressed, comma, it forced the British to reconsider their position on the ijaradari system, resulting in the introduction of permanent settlement in 1793. Resulting in the introduction of the permanent settlement in 1793. ठीक है जी. Number 2, Indigo Revolt, 1860. बंगाल. कैसे शुरू हुआ? When indigo planters of Bengal refused to grow indigo, which the British planters were forcing them to do. अब ब्रिटिश इंडिगो प्लांटेशन इंडिया में जनरली रैयती मेथड से करवाते थे. रैयती मेथड के अलावा इंडिगो प्लांटेशन का एक और मेथड था, दैट इज निज मेथड और निज कल्टीवेशन. अब निज कम्स फ्रॉम द वर्ड निजी विच मीन्स पर्सनल, राइट. निज कल्टीवेशन में जितना लैंड होगा, जितना भी लेबर होगा, जितने टूल्स होंगे, जितना पानी होगा, जितने सीड्स होंगे, वो सब ब्रिटिश प्लांटर ही ऑर्गेनाइज करवाएगा. खुद का लैंड होगा, खुद से लेबर हायर करेगा, खुद से ऑक्सिन मंगवाएगा, खुद से कार्ट्स मंगवाएगा, खुद से हल मंगवाएगा, खुद से कल्टीवेशन करवाएगा और खुद से ही उसको प्रोसेस करवाएगा, राइट. However, this was extremely difficult. Why? First of all, बंगाल वाले रीजन में जमीन कीमती बहुत ज्यादा थी, राइट. तो लैंड प्राइसेस were extremely high, and therefore for large plantations which are to be economically viable, उनको बनाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता था, इतनी सारी जमीन एक साथ इकट्ठा ऑर्गेनाइज करना. Secondly, it is also highly labor intensive. तो हर एकड़ के लिए कम से कम 2 फार्मर्स और 4 बुल्स की जरूरत पड़ेगी, along with 2 प्लाउज. ठीक है. तो मान लो 2000 एकड़ का फार्म है, तो 4000 लोग लगेंगे, 8000 ऑक्सिन लगेंगे, राइट. So that is also not going to be feasible. Thirdly, in such a scenario, अगर मान लो कि इंडिगो का सप्लाई में एक ग्लट आ जाता है, दैट मींस देयर इज ओवर प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में, प्राइसेस का क्या होगा? प्राइसेस आर गोइंग टू कोलैप्स, राइट. सारा का सारा नुकसान ये जो ब्रिटिश प्लांटर है इसको अपने सर पे लेना पड़ेगा, राइट. तो रिस्क वाज extremely high, and therefore in India the British planters, because they were able to corruptly control the political machinery, preferred the रैयती method of cultivation. रैयती cultivation में क्या होता है? That the indigo planter himself does not organize the bulk of the factors responsible for production. He may directly be involved in a small land holding. तो 15-20 एकड़ का उसका अपना एक खुद का फार्म होगा, बट वो अपने पूरे इलाके में
जितने भी फार्मर्स होंगे उनको वो फोर्स करेगा टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन अ पोर्शन ऑफ देयर लैंड, राइट? Now, these indigo farmers, they will have to be given certain amount as a loan. तो एक advance दिया जाएगा उनको. तो contracts are going to be forcibly enforced upon these. उसके basis पर the indigo planter, जो British planter है, इनको एक loan देगा. These people are going to organize their own labor factors. तो अपना खुद का labor, कुछ wage labor hire करना होगा उसको, कोई जमीन को क्लियर करना होगा, उसका खर्चा, पानी का खर्चा, ऑक्सीजन का खर्चा, ये सब लोग अपना उठाएंगे खुद से. एंड इन रिटर्न फॉर दिस एडवांस, आफ्टर द कल्टीवेशन, आफ्टर द हार्वेस्ट साइकिल, a certain quantity of indigo will have to be supplied to the British planter by these cultivators. ठीक है, इसको बोलते हैं रैयती method of cultivation. So with this, the problem of excessive demand of labor, the problem of the requirement of large quantities of land, the huge wage bill, as well as the risk of price fluctuations has been transferred by the planter to the poor farmers. और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कचहरी में जाएगा ये बंदा, और वहां पे कचहरी में जो जज होगा किसकी तरफदारी करेगा, फार्मर की या फिर प्लांटर की? प्लांटर की करेगा. सो इसको कोई एक्चुअल में डर भी नहीं है कि अगर मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, इलीगल काम कर रहा हूँ, तो कोई ब्लो बैक हो सकता है उससे. ठीक है, एज अ रिजल्ट हुआ क्या? प्लांटर्स का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया. लेकिन अगर मान लो कभी भी प्राइस फ्लक्चुएशंस होता, प्राइसेस डाउन होते थे, तो सारा का सारा बर्डन फार्मर्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता था. Farmers had to reserve a certain portion of their land for the cultivation of indigo. They would otherwise have used it for cultivation of food crops. Indigo cultivation जो है water intensive बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पानी लगता है उसमें. Secondly, it also deprives the soil of its fertility. तो soil degradation को promote करता है वो, right? तो water की availability भी कम हो गई और soil की quality भी खराब हो गई. Food production doubly affect हुआ इसकी वजह से. फोर्थली, जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ लेबर लगता है इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, दैट कुड हैव बीन बेटर यूज्ड इन अदर प्लेसेस फूड कल्टीवेशन के लिए, राइट? अब कोई फार्मर है जो कि इंडिगो प्लांटेशन कर रहा है, कोई फार्मर है फूड क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहा है. द इंडिगो फार्मर इज गोइंग टू बी एबल टू पे मोर वेजेस टू द वेज लेबरर. वेज लेबरर किसके फार्म में जाएगा, फूड प्रोड्यूसर या इंडिगो प्रोड्यूसर? इंडिगो प्रोड्यूसर. दिस ऑल्सो डिसरप्टेड द बैलेंस ऑफ द लेबर मार्केट. तो फूड प्रोडक्शन के लिए लेबर शॉर्टेजेस भी होने लग गई, राइट? एंड साथ में इकोलॉजी भी एडवर्सली इफेक्ट होने लग गई, राइट? एंड एज अ रिजल्ट द पेजेंट्स ऑफ बंगाल वर एक्सट्रीमली अनहैप्पी एंड thus they refused to cultivate indigo suddenly in 1860. Revolt of 1857 already हो चुका था. Now the peasants, especially in Bengal region, were starting to realize that they may not be as helpless as they earlier considered themselves to be. Then, towards the peasants, British government ने recently कुछ encouraging steps भी लिए थे. For example, tenancy reforms had been introduced in 1859. तो peasant में जो leadership था, that was now growing conscious of the fact that the British may be in a conciliatory mood. And अब की बार अगर हम रिबेल करते हैं, रिवोल्ट करते हैं इंग्लिश प्लांटर्स के अगेंस्ट, they may not be getting the same kind of protection that they have become accustomed to from the local administrative and legal machinery. And thus they began violating their legal contracts. तो केस इंडिया में शुरू हुआ था, बट बिकॉज बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज भी इमर्ज हो गई थी, कुछ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया who also had one step in the rural setting, क्योंकि वो बड़े लैंड ओनर्स भी हुआ करते थे साथ में, प्रोफेशनल के साथ साथ. तो दे स्टार्टेड गिविंग अटेंशन टू दिस. तो इंडियन प्रिंट मीडिया में इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके अब दिखाया गया. Then some literary figures also got involved because this was a very emotional issue, right? दीनबंधु मित्रा ने एक ड्रामा लिख दिया known as the नील दर्पण, showcasing the problems, the suffering of the indigo farmers, the exploitative attitude of the British planters,
the apathy of the British courts, the unfairness of this entire system, right? And इसको फिर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया, तो ये इंडिया से इंग्लैंड तक पहुंच गया, वहां पे भी पब्लिक में काफी सारी सिंपैथी इमर्ज हुई, राइट? व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस? ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन टर्न्ड शार्पली अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन इन इंडिया। तो प्रेशर में आकर के अंग्रेजों ने इंग्लैंड में एक इंडिगो कमीशन बनाई, राइट? उसका ओपिनियन क्या था? दैट एक भी संदूक नील का इंडिया से इंग्लैंड नहीं पहुंचता जिसकी सिंचाई इंडियंस के खून से ना हुई हो या ह्यूमंस के खून से ना हुई हो। नॉट अ सिंगल चेस्ट ऑफ इंडिगो रीचेस टू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया विदाउट बीइंग ड्रेंच्ड इन ह्यूमन ब्लड, राइट? इंडिकेशन क्लियर था। On the basis of this opinion, this recommendation, now एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में, that no farmer can be forced to cultivate any crop without his choice, and all contracts must be entered of free volition। तो फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए, कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो वो सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन इंडिगो प्लांटर्स एंड ब्रिटिश the Indian farmers, they were declared null and void, right? So Indigo Rebellion actually succeeded in ridding the indigo farmers of the destructive influence of British planters। लेकिन ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या किया कि चलो बंगाल में लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, बाकी इंडिया में उतने पढ़े लिखे नहीं है। So they simply packed up, moved a few hundred kilometers to the west, और बिहार में जाकर के इन्होंने अपना सेटअप दोबारा से बना लिया, ठीक है? So problem in Bengal ended, but it was simply transferred to Bihar. Clear? तो लिख लो इंडिगो रिवोल्ट 1860 बंगाल। कुछ लिखा है अभी आपने इसमें? नहीं? राइट डाउन। इंडिगो फार्मर्स इन बंगाल stopped cultivating indigo as a symbol of protest against the exploitation of British planters who were forcing them to cultivate the crop through coercive contracts. Full stop. Next point. Due to the involvement of the Bengali intelligentsia, comma, the issue received global attention and the British were forced to prohibit the forcible cultivation of indigo in Bengal. Prohibit the forcible cultivation of indigo in Bengal. Full stop. Subpoint. However, indigo cultivation continued in Bihar, where a local intelligentsia was yet to emerge.
ठीक है, तीसरा लिखो नंबर 3, पाबना रिवोल्ट 1870 बंगाल. It was a revolt of jute farmers against local zamindars led by a local zamindar himself. ठीक है, led by ईशान चंद्र रॉय, also known as विरोधी राजा. What was the issue? That over the recent years, this region, जो region of पाबना है, that was facing a drought, जिसकी वजह से जूट कल्टीवेशन में डाउनफॉल हुआ था, राइट. एंड जो क्रॉप फेलियर्स की वजह से नुकसान हो रहा था, उसके चलते हुए द फार्मर्स वर नॉट इन अ पोजीशन टू पे द रेंट टू देयर लोकल जमींदार्स. तो दे वांटेड रिमिशन ऑफ रेंट, की थोड़ी उसमें मोहलत हो जाए, तो उसको माफ कर दिया जाए, उसका अमाउंट कम कर दिया जाए, राइट. But the local zamindars were not ready to listen. What was the attitude of the British? Pro farmer or pro zamindar? Pro zamindar, क्योंकि these were acting as the middlemen. The bulk of rent collect होता था, that was being given to the company. However, farmers were not in a position to pay. In this background, Ishan Chandra Roy led a peasant uprising targeting both the other local zamindars as well as the local administrative machinery. Outcome क्या हुआ? The uprising was violently suppressed. But what did it showcase? That peasant discontent in the region of Bengal was more pronounced in areas that were affected by कैश क्रॉप कल्टीवेशन. जो ज्यादा कमर्शियलाइज्ड एरियाज हैं, जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा कमर्शियलाइज्ड है, दे आर गोइंग टू बी मोर सब्जेक्ट टू अग्रेरियन रिवोल्ट्स, अग्रेरियन रिबेलियंस. ठीक है, राइट डाउन. The jute farmers of Pabna were demanding a remission of rent, and concession of dues owing to severe crop failures. However, the local zamindars did not relent. Next point. Thus, the peasants rebelled against these zamindars and the government under the leadership of Ishan Chandra Roy, within brackets, Virodhi Raja. Full stop. Next sub point.
The uprising was violently suppressed. The uprising was violently suppressed, but clearly demonstrated that commercialization of agriculture in India was a major contributor to peasant discontent. ठीक है, ये हो गया पाबना रिवोल्ट. नेक्स्ट, द डेक्कन राइट्स. peasant discontent. Number 4, Deccan riots. Write down. The region of Deccan especially around Pune was swept by, especially around Pune, was swept by a wave of agrarian riots by peasants against Marwadi traders, and Sahukars. Marwadi traders and Sahukars. ठीक है? On the surface, it appears that this rioting was the result of ethnic hatred or linguistic jealousies, linguistic competition between the Marathi speakers, local peasants there, and the Marwadi speakers, the traders and Sahukars. But basic factor क्या था इसके पीछे? It was the exploitation of the local Marathi peasant community by these outsiders who were serving as sahukar. Sahukar का मतलब क्या होता है? Money lender, right? With the introduction of the Raidwari system in Maharashtra region, the demand for loans had increased. और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए नॉर्थ से कई सारे मारवाड़ी यहाँ पे आकर के सेटल हुए थे. They were engaged both in trade as well as मनी लेंडिंग एक्टिविटीज. मनी लेंडिंग की वजह से क्या हुआ था? रूरल इंडेटेडनेस, बॉन्डेड लेबर, ये सब बढ़ रहा था. The Sahukars also had free reign to demand anything from the peasants far over and above what they were actually owed, right? So this was resulting in a great degree of discontent. In 1875-76, this resulted in a series of agrarian riots where these individuals, these traders as well as Sahukars were attacked, they were targeted, their kothis were plundered, their account books were burnt publicly, and in some cases, some individuals were also even killed. ठीक है? तो ये जो है बेसिक कॉज इसका क्या है? इज इट लिंग्विस्टिक कॉम्पिटिशन और हेट्रेड, और इज दिस द रिजल्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट? Class conflict, right? The British administration had created a system where it became possible for one class to exploit the other. अब इसमें ज्यादा मिर्च मसाला और लग गया क्योंकि these Marwadi traders and Sahukars were seen as outsiders. So they were seen as almost foreign collaborators of the foreign British regime who were exploiting the local peasantry. ठीक है? तो आगे लिखो. Superficially, it seems that this was a case
of linguistic and cultural conflict. Next point. However, upon closer observation, it becomes clear that this was the manifestation of a class conflict. A class conflict. This was the manifestation of a class conflict. Full stop. Next point. The Rayatwari system had created the platform for the entry of moneylenders into the rural Deccan. Full stop. This opportunity was capitalized upon by some individuals of the Marwadi community. Full stop. Next point. Gradually, comma, the Deccan peasantry fell into the clutches of these Marwadi Mahajans and Sahukars. Resulting in rising poverty, landlessness, and bonded labor. Full stop. Next point. The British legal machinery offered no protection to the peasants from these predatory moneylenders, and even favored the exploitative class. Full stop. Next point. The issue was further contrasted as class differences overlapped
with cultural and linguistic differences. With cultural and linguistic distinctions. Full stop. Next point. The peasants targeted the houses of the moneylenders, comma, the shops of Marwadi traders, comma, government buildings, and kotwalis. Full stop. Next point. The public burning of moneylenders' ledgers, account ledger होता है उनका, emerged as the most common activity. Full stop. Next point. The uprising lasted almost 2 years. Following which the Deccan Riots Commission RIOTS, the Deccan Riots Commission, was appointed and recommended substantial reforms. Full stop. Next point. The local Marathi intelligentsia comma, especially the Pune Sarvajanik Sabha, made a strong case in favor of which class? Peasants or moneylenders? In favor of the peasants. Next main point. The Deccan Agriculturalists Relief Act 1879 provided some protections to peasants, including the provision that an individual could not be imprisoned simply for defaulting on a loan.
लोन। ठीक है, so some measure of relief was provided to the Deccan agriculturalists, but neither were these reforms sufficient to bring about any substantial change in the general conditions of the peasants. They were simply able to provide some relief to loosen the grip of the outside moneylenders on the peasants. But Rayatwari system still continued, the peasants still continued to groan under the rising pressure of high burdens of taxation. ठीक है, so ये हो गया the Deccan riots, and finally we have the Eka movement 1920-21 Awadh. Write down number 5, Eka movement 1920-21 Awadh. Right, at this point of time हिंदुस्तान में और कोई मुहिम चल रही थी, कोई बड़ा मूवमेंट चल रहा था? कौन सा? The non-cooperation movement was going on, and जो farmers हैं अवध region के, they had been asked by Mahatma Gandhi not to cooperate with the British revenue collectors. ठीक है, तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था अवध में नो रेवेन्यू कैंपेन. ठीक है, because he wanted to hurt the British economic interest, which was the very basis of their empire in India. Right, now in the region of Awadh, the movement became increasingly radicalized. The peasants and the local peasant leadership, जिसमें मदारी पासी, local peasant leader, was the most influential. They started to gradually realize that yes, अंग्रेज को वीकन करेंगे तो हमारा फायदा होगा ही, बट आवर रियल एनिमी एट द ग्राउंड लेवल इज नॉट द ब्रिटिश रेवेन्यू ऑफिशियल. ये तो हम हमारी शक्ल भी नहीं देखता है. राइट, वी एंगेज डायरेक्टली विद आवर लोकल इंटरमीडियरीज, लोकल जमींदार्स और लंबरदार्स. राइट, वहां पे महलवारी सिस्टम लगता था. तो दे वर द मेन सोर्स, चीफ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लोकल पेजेंट्री. तो यहाँ पे मदारी पासी ने क्या कहा कि ना टैक्स देंगे ना किराया देंगे. सो अलोंग विद नो रेवेन्यू कैंपेन ही आल्सो बिगन अ नो रेंट कैंपेन. राइट, so with this a fissure began emerging within the Congress led non-cooperation movement. Mahatma Gandhi had tried to assemble a grand alliance of all Indians against the British. That was the primary contradiction in Indian nationalism, the interests of the Indians versus the interests of the British. On the other hand, he was emphasizing upon the unity of all Indians. क्लास रिलेशनशिप का उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला था? क्लास कोऑपरेशन. बट ये जो नो रेंट कैंपेन है, दैट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन हिज आइडिया ऑफ क्लास कोऑपरेशन. ठीक है, सो फ्रैक्चर्स हैड स्टार्टेड इमर्जिंग विद इन इंडियन नेशनलिज्म, एंड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का क्या मानना है? दैट दिस वाज द रियल रीजन why Mahatma Gandhi suddenly withdrew the non-cooperation movement in February 1922. Because ये जो आग अवध में लगी थी, अब दूसरे जगहों पे भी फैलनी शुरू हो रही थी. बंगाल में भी, पंजाब में भी एलिमेंट्स ऑफ रेडिकलिज्म, peasant radicalism were becoming visible, and that is why he withdrew the non-cooperation movement suddenly, thus deflating the Eka movement led by Madari Pasi of its energy. Clear? Write down. In the backdrop of the call for non-payment of revenue,
During the non-cooperation movement, comma, the farmers of Awadh began a no-rent campaign against the local intermediaries such as zamindars, talukdars, and lambardars. अलग अलग जगहों पे इन्हीं इंटरमीडिएट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता था. कहीं पे तालुकदार, कहीं पे जमींदार, कहीं पे लंबरदार, कहीं पे मिरासीदार बोला जाता था. बट मतलब दोनों का सेम है. इट इज अ प्रेडिटरी इंटरमीडिएट, सॉरी, इट इज अ पैरासिटिक इंटरमीडिएट क्लास, रेंट सीकिंग क्लास है. ठीक है. दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. दे आर सिंपली देयर टू मैनेज एंड ओवरसी रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है. तो दैट इज व्हाट देयर जॉब इज. इनके अगेंस्ट मदारी पासी के अंडर पेजेंट्स ने एक नो रेंट कैंपेन शुरू कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. विद दिस fractures became visible in the Grand Alliance of Indians that Mahatma Gandhi had raised against the British. Full stop. Next point. The no rent campaign was a direct attack on Mahatma Gandhi's vision of class cooperation and trusteeship. Full stop. It threatened to violently divide Indians amongst each other. Next point. Therefore, Marxist historians allege that rising peasant radicalism, that rising peasant radicalism against zamindars, was the real factor that prompted Mahatma Gandhi to suddenly withdraw the non-cooperation movement.
गांधीयन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं? गांधी जी ने क्यों विड्रॉ किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को? Because of the Chauri Chaura incident. Violence was against his very ideology of satyagraha, and it was not palatable to him. So on ideological grounds he had withdrawn it. Marxist historians क्या बोलते हैं? That Chauri Chaura was simply a convenient excuse that Mahatma Gandhi used to fulfill his real intention of protecting the interests of the zamindar class, of the landowner class. ठीक है? Write down sub point. Thus, the Chauri Chaura incident was simply a convenient excuse. ठीक है? तो ये हो गए peasant rebellions. Was simply a convenient excuse. ठीक है? नेक्स्ट हमें देखने हैं the Politico-Religious uprisings. Such as the Sannyasi rebellion, the Fakir uprising, the Pagalpanthi revolt, the Parezi rebellion, the Puka rebellion, the Mopla revolt, etc. ठीक है? So what was the basic character of these uprisings? These were organized by the leaders and members of various religious communities against British rule. These were rebellions of various religious communities against British rule. ठीक है? And since they involve various religious communities, जो rebellion का स्लोगन होगा वो religious होगा या नॉन religious होगा? Religious होगा. So religious sentiment was heavy with these rebellions. You can say that these rebellions were heavily steeped in religious fervor, religious sentiment. So on the surface, it appears that these were the outcomings of certain religious communities, or these were the reactions of certain religious communities against religious disabilities which were being imposed upon them
because of the British rule. So superficially, they appear to be purely religious uprisings. Because they are being raised by different religious communities in the name of their religion with a heavy dose of religious sentimentality for apparent disabilities and restrictions imposed upon them in the practice of their religion and customs by the British. Superficially, it appears that these are religious uprisings. But upon closer observation, जो actual reality है वो रिवील होता है क्या that the factors were not religious or spiritual, rather they were material, they were political or economic, such as the loss of traditional privileges by leaders of various religious communities, the economic pressure imposed upon various communities due to the introduction of British rule, the British revenue system, British administration, loss of revenue, etc. Right? तो इस तरह के फैक्टर्स थे. तो ये स्पिरिचुअल फैक्टर्स हैं या मटेरियल फैक्टर्स हैं? मटेरियल फैक्टर्स. It is simply a coincidence, or not actually even a coincidence. The reason that they appear to be religious uprisings is simply because they were enveloped in their religious identity. They were raised in the name of religion. They were enveloped in religious identity. And why was this? Because जो इन communities के leaders थे, the basis for their role in the society, for their position in the society, was the recognition of themselves as the leaders of these religious communities. Secondly, religion is a very emotional matter to Indians even today, and the emotional association attachment that Indians felt toward their religions back in the 18th or 19th century was even more pronounced. So the inherently emotive appeal was a very good mobilizing tool in the hands of the religious leadership. ठीक है? So real factors हैं political and economic, but जो appearance है इन uprisings का, that is religious. Was this something new in the context of Indian history? या फिर ऐसा पहले भी हो रहा था? पहले भी हो रहा था. We have seen such a development during the Mughal period. मुगल पीरियड में जितने भी लोकल रिबेलियंस हुए, सच एज दी जाट रिबेलियन, दी सिख रिबेलियन, दी सतनामी रिबेलियन, दी राजपूत रिबेलियन और दी मराठा रिबेलियन. ऑल ऑफ देम हैड अ डेफिनेट रिलीजियस टिंज. तो उसमें रिलीजन का जो टच है, कलर है, वो तो प्रेजेंट था. ठीक है? बट जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो क्या थे? दे वर मटेरियल. राइट? सो द organization of politico-religious uprisings against colonial rule was in keeping with the tradition of Indian history itself. क्लियर है? अच्छा, अब ये सन्यासीज और फकीर्स कौन थे? सन्यासीज थे जो हिंदूज में लोग सन्यास ले लेते हैं, रिनंसिएंट्स हो जाते हैं, मेंडिकेंट्स हो जाते हैं. तो इनका गुजारा बसारा कैसे होता है? भीख मांग के कलेक्शन ऑफ आर्म्स. They move from place to place, village to village, town to town, begging for alms. And gradually over time,
इनके रूट्स डेवलप हो जाते हैं, दैट जो सन्यासीस का प्रोसेशन है एक जगह से चलेगा एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर दूसरी जगह पे पहुंचेगा, एंड देन दे वुड रिपीट दिस प्रोसेस। अलग अलग जगहों से गुजरते हुए वो निकलेंगे, दे वुड कलेक्ट आर्म्स, give religious and spiritual nourishment to the local people. They will even legitimize the rule of the local pluripotentiaries such as the zamindars etc. उनको shelter provide करेंगे, right? And ultimately जो फाइनल डेस्टिनेशन है जहां पे ये पहुंच रहे हैं और बीच में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स पे साइट्स ऑफ पिलग्रिमेज बना देते थे, ठीक है? तो रिलीजन में सोसाइटी के इंटीग्रेशन में और स्टेबिलिटी में इनका इंपॉर्टेंट रोल इमर्ज होकर के आया था। सेम वाज द केस विद दी फकीर्स। जैसे हिंदू में सन्यासी होते हैं मेंडिकेंट्स, मुसलमानों में फकीर्स होते हैं। एंड जो ये सन्यासी हैं फकीर हैं, दे वर बीइंग सपोर्टेड नॉट ओनली बाय देयर को रिलीजनिस्ट्स, यानी कि कई सन्यासियों को जो मुसलमान जमींदार हो गए या फिर कोतवाल हो गए वो लोग भी चंदा देते थे। सेम वाज द केस विद दी फकीर्स, ठीक है? तो उधर बंगाल में ये सब चलता रहता था। पिलग्रिमेज के प्लेसेस भी इमर्ज हुए, बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल अंग्रेजों ने क्या किया, जो बंगाल के जमींदार थे उनको प्रेशराइज करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है? सेकेंडली जो जमींदार थे उनके जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस थे वो उनसे छीन लिए गए। फॉर एग्जांपल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में ही इजारादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। थर्डली हुआ क्या कि सन्यासी और फकीर के जो एनुअल माइग्रेशंस होते थे दैट यूज्ड टू डिसरप्ट एग्रीकल्चर लोकली, ठीक है, इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश। तो अंग्रेज ये मानने लग गए कि ये जमींदारों को फोर्स कर रहे हैं हमें पैसा दो, हाँ ये पेजेंट्स को फोर्स कर रहे हैं हमें पैसा दो, नॉट रियलाइजिंग दैट द जमींदार्स एंड पेजेंट्स वर गिविंग देम मनी आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। उनको अच्छा लगता था इनको सपोर्ट करना, ठीक है? एंड इनके मूवमेंट के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। तो नेचुरल रिएक्शन क्या होगा? रिबेलियंस होंगे। सन्यासी ने भी रिबेलियन किया, फकीर्स ने भी रिबेलियन किया, एंड रिजल्ट क्या हुआ? मेजर अपराइजिंग, जहां पे द सन्यासीज वर सपोर्टेड बाय द पेजेंट्स एज वेल एज जमींदार्स। इनफैक्ट कुछ एलिमेंट्स इनमें ऐसे भी थे व्हिच वर नॉट टू बी एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल जो नवाब की पुरानी सेना के कुछ सैनिक थे जिनकी अब नौकरियां चली गई थी, they also joined them. Why? Because in the absence of their traditional source of income, they had also gotten involved in agriculture in various capacities. कुछ या तो डायरेक्टली कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो चुके थे या फिर कुछ ओवरसीयर्स की तरह इमर्ज हुए थे, कुछ इंटरमीडिएरीज की तरह इमर्ज हुए थे। तो अ ग्रैंड कोलिशन इमर्ज्ड इन बोथ केसेस। The uprisings lasted for several years, even several decades. For example, सन्यासी रिबेलियन जो है 1870s में शुरू हुआ था, 1820s में जाकर के इसको फाइनली सप्रेस किया गया। कई स्टेजेस में आया। सेम इज द केस विद द फकीर अपराइजिंग। पागलपंथी एक सेक्ट था सूफी मुस्लिम्स का, ठीक है? दे एम्फसाइज्ड अपॉन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। नाउ they were also involved in similar activities as the fakirs, so they depended upon the local community to support them. They also enjoyed a great degree of respect among the local communities. अब ये जो local communities थी, they were feeling pressure, so the पागलपंथी leadership that responded. Both Hindus as well as Muslim peasants of Bengal also responded. इन्होंने टारगेट किसको किया? ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी टारगेट किया, साथ में जो एक्सप्लॉइटेटिव जमींदार थे उनको भी टारगेट किया। वंस अगेन दिस अपराइजिंग लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 20 इयर्स, 1838 से लेकर 1858 तक, यानी कि ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी इन्होंने एक रोल अदा किया। फरेजी रिबेलियन, तो फरेजी जो थे, दिस वाज एन ऑफशूट ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट इस्लाम में एक प्यूरिफिकेशन का मूवमेंट था, प्यूरिटैनिकल मूवमेंट था, यानी कि जो इस्लाम का जो ओरिजिनल रास्ता था उस पे मुसलमानों को वापस लाने की मुहिम थी। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर डिविएटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ ऑफ रिलीजन। कई सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने लग गए थे। तो वहाबी मूवमेंट अरेबिया में इमर्ज हुआ, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे और जो रीजनल कल्चर था
वो इतना स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट था कि इवन इस्लाम की ऑर्थोडॉक्सी को भी उसने मोल्ड कर दिया था. इस्लामिक रिलीजन हैड अडेप्टेड इन वेरियस वेज, और कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस कुछ रीजन्स में मुसलमान करने लग गए थे विच वर नॉट एक्सेप्टेड अंडर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम. अच्छा, कुछ स्कॉलर जो हैं वो डायरेक्टली इन वहाबीज के इन्फ्लुएंस में आए और अपने अपने इलाकों में उन्होंने इसी तरह के प्यूरिटैनिकल मूवमेंट स्टार्ट कर दिए. वन सच मूवमेंट इमर्ज्ड इन बंगाल नोन एज द फरेजी मूवमेंट. अब ये जो फरेजी मूवमेंट था, इसका ऑब्जेक्टिव था बंगाल के रीजन में एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने का. तो बंगाल के रीजन में इस्लामिक स्टेट अगर एस्टैब्लिश करना है तो किसकी छुट्टी करनी पड़ेगी? पहले अंग्रेजों की छुट्टी करनी पड़ेगी, राइट? तो एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई. दिस मूवमेंट आल्सो लास्टेड फॉर सेवरल इयर्स बिफोर इट वाज सप्रेस्ड. कोका रिबेलियन इसी तरह का एक रिबेलियन था इन द रीजन ऑफ पंजाब. सिख कम्युनिटी में एक प्यूरिटैनिकल मूवमेंट शुरू हुआ. इस मूवमेंट को नामधारी मूवमेंट भी बोलते हैं. तो कोका रिबेलियन और नामधारी रिबेलियन. नाउ इनिशियली पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, लेकिन बाबा राम सिंह के इन्फ्लुएंस में इट बिकेम अ प्यूरिटैनिकल मूवमेंट दैट आल्सो टारगेटेड ब्रिटिश रूल. तो इनका ऑब्जेक्टिव था पंजाब के रीजन में सिख रूल को रीएस्टैब्लिश करना, सो दैट प्रॉपर सिख रिलीजन एंड कस्टम्स कुड बी रीइंट्रोड्यूस्ड अमंग द पीपल लिविंग देयर, राइट? लेकिन ये वायलेंट रिबेलियन नहीं था. नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन के एलिमेंट्स इसमें दिखते थे, राइट? फॉर एग्जांपल द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश सर्विसेज, ब्रिटिश स्कूल्स एटसेट्रा. बट ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज एक्सट्रीमली वायलेंट अगेंस्ट इट. एंड मोपला रिवोल्ट कहां पे देखा गया? इन द रीजन ऑफ केरला, राइट? मोपला जो थे, दे वर अ कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम कल्टिवेटर्स who had arrived and settled in Kerala from the region of Arabia in the 8th century itself. यानी कि 7th 8th century जब इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ था पहली बार, तभी कुछ अरब मर्चेंट्स कन्वर्ट होने के बाद इस रीजन में आए, सेटल हुए, लोकल वुमेन से इन्होंने मैरी किया. एंड मलयालम लैंग्वेज में मोपला या मापिला का मतलब होता है सन इन लॉ. सो दीज वर दी Arab Islamic settlers who settled in the region of Malabar from the 7th century onwards. अब मोपला जो थे, दे वर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द इकोनॉमिक लैडर. तो जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर था उसमें 3 लेयर्स थे, 3 लेवल्स थे. सबसे ऊपर आते थे द जनमीज. दीज वर द ट्रेडिशनल हेरिडिटरी लैंड ओनर्स, ठीक है? उसके नीचे आते थे द कुडियम्स. तो जो जेन्नीज थे, इनकी लैंड होल्डिंग्स इतनी बड़ी थी that they did not have the practical ability to oversee cultivation in the entire region or even to oversee directly the collection of revenue. So this task was given to several agents. तो अपनी जो लैंड होल्डिंग्स थी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते थे, कुडियम्स को दे देते थे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द कल्टिवेशन एज वेल एज रेवेन्यू कलेक्शन. एंड सबसे नीचे लेवल पे आते थे दी मोपलाज. ठीक है? Now, Moplas were all Muslims, whereas the Kodiams and Janmis were Hindus. ठीक है? अब इसमें बताओ, एक तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? जो ये अपर लेवल्स पे हैं, देयर इंटरेस्ट्स आर गोइंग टू बी अलाइंड विद ईच अदर. इसमें इनका फायदा, उसमें इनका फायदा. बट जिसमें इनका फायदा, क्या उसमें इनका फायदा भी होगा? नहीं होगा, राइट? तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट केरला के अग्रेरियन स्ट्रक्चर में इनबिल्ट था इनहेरेंटली. साथ में क्या ऐड हुआ? रिलीजियस इक्वेशन भी ऐड हो गया, क्योंकि जो अपर क्लासेस हैं दे वर ऑल हिंदूज, जो लोअर क्लासेस थे दे वर ऑल मुस्लिम्स. एंड जब पॉलिटिकल इश्यूज में रिलीजन का एंगल या लैंग्वेज का एंगल घुस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनलिज्म. ठीक है? तो केरला में, मालाबार में जो पॉलिटिक्स है, दैट वाज ऑलवेज स्टीप्ड इन
communalism at least from the 9th century onwards. However, सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो कल्टिवेटर्स थे ना, they were enjoying great degree of privileges. Although they were not considered landowners, लेकिन इनके पास security of tenure था. ठीक है? Burden of taxation was also not very high, so they could live a dignified life. इनके जो निजी मामले हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन वाले मामले हैं, उसमें स्टेट का कोई या फिर जेनमीज का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था. Plus, there was also one major factor which connected these communities with each other. तो although ये मुसलमान हैं, हिंदू हैं, लेकिन भाषा दोनों एक ही बोलते थे. ठीक है? That means both of them spoke Malayalam language only. Secondly, it was not uncommon for people from different communities to marry into each other. तो जो नंबूदरी ब्राह्मण्स थे जन्मीज के, they are known to have had several Muslim wives. Similarly, जो मोपला peasants थे, they were known to have taken women from Hindu communities, especially Nair community से, right? तो जो religious divide है, communalism है, उसका अंडरटोन तो प्रेजेंट था, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता था. इट वॉज मोर कोऑपरेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है? सिचुएशन चेंज होने लगती है फ्रॉम 1790s onwards. 1790s में the region of Malabar is invaded by Tipu Sultan. नॉर्थ मालाबार को वो अटैच कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, राइट? एंड टीपू सुल्तान नीड्स people who are loyal to him in this region, क्योंकि अभी ये नया नया ऑक्यूपाइड रीजन है, यहाँ पे अपने खुद के कुछ लॉयलिस्ट उसको कल्टीवेट करने की जरूरत है. तो बताओ इन तीनों में से किस वाले ग्रुप को वो अप्रोच करेगा? मोपलास को, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम रिलीजन, एंड सेकेंडली बिकॉज दे हैव द मोस्ट टू गेन इस इक्वेशन में. इनके जो इंटरेस्ट थे वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो इनसे इनको अप्रोच करने का फायदा नहीं है, राइट? तो मोपलास को क्या करेगा? Moplas were declared as landowners, और जो जेनमीज एंड कोडियम्स थे उनके जो ट्रेडिशनल हेरिडिटरी राइट्स थे वो सारे अबॉलिश कर दिए गए. ठीक है? अच्छा, 1799 क्या होता है? The Fourth Anglo-Mysore War. Tipu Sultan is defeated and Malabar is restored to Travancore, which becomes a protectorate of the British, right? और मालाबार रीजन में अंग्रेज निकाल देते हैं, लगा देते हैं रैयतवारी सेटलमेंट का एक वर्जन. ठीक है? अब बात आती है कि लैंड ओनर कौन है, राइट? तो जो रूलर ऑफ ट्रावेनकोर है एज वेल एज द कंपनी, व्हाट आर दे मोस्ट इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू इनकम. तो ऐसे में किसको वो अप्रोच करेंगे या किसको फेवर करेंगे? दे आर गोइंग टू रिस्टोर द लैंड ओनरशिप राइट्स ऑफ द जेनमीज, और साथ में वो क्या करेंगे? जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था मोपलास का, उसको वो इंटैक्ट रखेंगे या उसको भी खत्म कर देंगे? दे आर गोइंग टू एंड दैट आल्सो. तो द मोपलास lost their traditional protections, and as they lost their traditional protections, the Genoese and Kodiams, इनका जो alliance है, they are going to begin brutally exploiting the Moplas. तो अब ये जो equation है, ये और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा या फिर ये और ज्यादा सप्रेस हो जाएगा? और प्रोनाउंस हो जाएगा. एज अ रिजल्ट कम्युनलिज्म क्या क्या होगा? इज इट गोइंग टू स्ट्रेंथन और वीकन? स्ट्रेंथन. जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, जो रिलीजियस हेट्रेड का फीलिंग है, दैट इज गोइंग टू बिकम मोर प्रोनाउंस्ड. एंड
बार बार राइट्स होंगे, एंड विद ईच एंड एवरी राइट कम्युनलिज्म का जो घोस्ट है, उसका जो शैडो है, इट इज गोइंग टू बिकम लॉन्गर एंड लार्जर, राइट। प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगा फॉर ऑलमोस्ट 100 years, इनफैक्ट मोर देन 100 years। तो 1800 से लेकर के 1896 तक several series of riots are going to take place, which are going to involve the targeting of Hindu Jennis and Kudiyams along with the British officials by the local peasantry. And ये actually में इनका basis for discontent religious नहीं है, it is political and economic, but by the end religious hatred is going to become going to play an equally important role, ठीक है। 1896 में कुछ बड़े ऑपरेशंस होंगे और कुछ लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बड़े ऑपरेशंस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉकेट्स ऑफ मोपलर रेजिस्टेंस है, दे आर गोइंग टू बी वाइप्ड आउट, एंड लीगल रिफॉर्म्स में सम प्रोटेक्शंस आर गोइंग टू बी रिस्टोर्ड टू दी मोपलर्स, फॉलोइंग व्हिच नो मेजर रायट टेक्स प्लेस इन दी रीजन ऑफ केरला टिल 1921, राइट। इस दौरान क्या चल रहा था हिंदुस्तान में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई थी, किस मूवमेंट से? खिलाफत मूवमेंट से। खिलाफत मूवमेंट किस तरह का मूवमेंट था? रिलीजियस मूवमेंट था, जो कि कांग्रेस ने लॉन्च किया था, महात्मा गांधी ने कॉल दिया था। इसमें किस कम्युनिटी का रिलीजियस इशू इन्वॉल्व था? मुस्लिम कम्युनिटी का। एंड देयरफॉर मोपला में, सॉरी, मालाबार में जो सप्रेस्ड रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे मुस्लिम्स के, अब उसको कांग्रेस जानबूझ करके बढ़ावा देने लग गया। मुस्लिम्स वर ब्रॉट टुगेदर, ऑर्गेनाइज टुगेदर, जुम्मे की नमाज करवाई गई। वहां पे जो इमाम साहब है वो कुछ मैसेज वैसेज देते हैं, तो वहां पे उन्होंने किस तरह की तकरीर देनी शुरू करी कि आपको अब यूनाइट होने की जरूरत है, अपने दुश्मनों को हराने की जरूरत है। दुश्मन उसमें कौन निकलेंगे? एक तो जो नए दुश्मन है अंग्रेज, जो ट्रेडिशनल दुश्मन है वो कौन से निकलेंगे? जो जेनमीज हैं, राइट। And as a result, in 1921, the worst excesses of the Mopla riots took place. So there were severe riots in which both the British were targeted, यानी कि जो केरला में ब्रिटिश थे उनको भी टारगेट किया गया। इनफैक्ट जो केरला के क्रिश्चियंस थे उनको भी टारगेट किया गया, बिकॉज दे वर सीन एज लॉयलिस्ट ऑफ द ब्रिटिश। एंड साथ में टारगेट किसको किया गया? जो हिंदू कम्युनिटी है। And finally, the British had to bring in arms, ammunition, and men from outside the Malabar region in order to suppress this uprising. वो जो केरला के मलयाली हिस्टोरियंस हैं, वो सारा ब्लेम किसको देते हैं इसके लिए? गांधी जी को देते हैं कि जहां पे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी वहां पे नहीं अड़ानी चाहिए थी। रिलीजन इज समथिंग विच शुड नेवर हैव फीचर्ड as a prominent agenda for a secular all India political party like the Congress, ठीक है। आपने एक तो कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बन जाए, वो बन नहीं पाई, थोड़े समय के लिए बनी, लेकिन जैसे आपने विड्रॉ किया मूवमेंट को, मुसलमानों को लगा कि गांधी जी ने हमारा हाथ छोड़ दिया, इनफैक्ट पीठ में खंजर भोग दिया है। दे बिकेम एंटी कांग्रेस, एंड क्योंकि वो एंटी कांग्रेस है तो हिंदूज को आपने और ज्यादा टारगेट किया, उनको अपीज करने की कोशिश करी, तो अब फासला बढ़ता चले जाएगा। तो इसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज मालाबार रीजन में भी बहुत खराब रहे, और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज भी फॉर द फ्यूचर हेल्थ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, दैट वाज आल्सो वेरी पुअर, ठीक है। तो दिस इज वन रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट फेलियर्स ऑफ महात्मा गांधीज पॉलिसी। क्लियर? तो ये है पॉलिटिको रिलीजियस अपराइजिंग्स। इनके जो नोट्स हैं वो कल डिक्टेट करवा देते हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी एंडिंग दिस lecture now.